In the year 1985, Narayan Seva Sansthan was founded by revered Gurudev Sri Kailash Ji Manav with the mission of alleviating the suffering of humanity, poverty and disability. Following the principle that God resides in every human being, Nar Hi Narayan Hai, the Sansthan has been tirelessly working to uplift the afflicted, impoverished and differently abled brothers and sisters through various free services. The Sansthan conducts 80 to 100 successful corrective surgeries every day, transforming physically challenged individuals into self-reliant individuals. Till date, we have done more than 4,42,483 live surgery. Additionally, it offers financial aid and medical assistance to economically disadvantaged individuals suffering from serious illnesses such as heart defects, limb deformities, kidney issues, and cancer. Narayan Seva Sansthan also empowers differently abled individuals by providing vocational training in sewing, handicrafts, mobile repairing, and computer skills at its vocational training centers. Through these programs, differently abled brothers and sisters are gaining employment opportunities in various fields. Till date, Sansthan did installation of 3,84,507 caliper and about 35,495 modular artificial limbs, along with 2,84,757 wheelchair and about 2,70,934 tricycle distributed. Sansthan organizes camps for the differently abled in the country as well as abroad under the scheme Kuan Pyase Ke Paas. Till now, Sansthan has organized camps in South Africa, Kenya, Tanzania, Uganda, Nepal, and also treated patients from Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, UK, Croatia, and Canada, and provided a new life to the disabled people by making them specially abled. Sansthan aims to bring a change in the lives of differently abled people in the country as well as abroad by providing them complete rehabilitation along with medical assistance. The Sansthan also provides daily meals to 4,000 brothers and sisters in need. In addition to physical empowerment and employment-oriented training, Narayan Seva Sansthan actively works to integrate differently abled individuals into mainstream society. This includes organizing mass weddings for the economically disadvantaged and differently abled, hosting national-level differently abled sports competitions, and conducting fashion and talent shows. For underprivileged and needy children, Narayan Seva Sansthan operates the Narayan Children Academy, an English medium digital school that provides education free of cost. The visionary founder, revered Gurudev Sri Kailash Ji Manav, has been honored with the Padma Shri by the President of India. मैं भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल व्यक्तिगत गुणों के लिए आपके सम्मानार्थ पद्मश्री प्रदान करती हूँ। व्यक्तिगत अतिरिक्त पुरस्कार श्री कैलाश चंद्र अग्रवाल and has received numerous national and international accolades for his outstanding contributions to the upliftment of impoverished and differently abled brothers and sisters.
दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का पुरस्कार जाता है श्री प्रशांत अग्रवाल, राजस्थान। आप नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के अध्यक्ष हैं। आवासीय विद्यालयों, व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों, सहायक यंत्रों और उपकरणों के निःशुल्क वितरण में आपकी अहम भूमिका रही है। श्री प्रशांत अग्रवाल, राजस्थान। Guinness Book of World Record for the largest wheelchair cricket tournament was organized by Narayan Seva Sansthan at Udaipur, India on 3rd December 2022. कैलाश मानव जी से मेरा लगभग 20 वर्ष पुराना एक आत्मीय संबंध है। कैलाश मानव नहीं, अब तो वो कैलाश महामानव हो गए। लगभग 3,70,000 पोलियो से पीड़ित बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करना, यह एक विश्व कीर्तिमान बनाया है नारायण सेवा संस्थान। बहुत बड़ी बात है। कैलाश मानव जी कोई बहुत बड़ी, कोई पीठ के, कोई गुरु परंपरा के या किसी औद्योगिक घराने के प्रतिनिधि नहीं है। उनके हृदय में गरीबों के लिए, विशेषतः विकलांगों के लिए एक पीड़ा थी, एक संकल्प था। आज पूरे राष्ट्र और विश्व में नारायण सेवा संस्थान सेवा का एक पर्याय बना है। मैं आदरणीय श्री कैलाश मानव जी, भाई प्रशांत जी सहित पूरे नारायण सेवा परिवार को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं बोलता वैसे बहुत कम हूँ, मुस्कुराता हूँ ज़्यादा, और सबके चेहरे में मुस्कान लाने का ये जो प्रयत्न कर रहे हैं नारायण सेवा संस्थान, ये बहुत श्लाघनीय है। ये बहुत अति उत्तम सेवा है। यही पूजा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। जन की पूजा ही जनार्दन की पूजा है। तो ऐसा ये आदर्श के साथ, उद्देश्य के साथ, सिद्धांत के साथ ये संस्था आगे बढ़ रही है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारी गाड़ी स्टेशन पर जाती है, उन बच्चों को लेकर आती है। यहाँ उनका उपचार होता है, उनका खाना पीना रहना सब कुछ निःशुल्क रूप से उनकी व्यवस्था और सेवाएं इस संस्थान के द्वारा दी जाती है। While polio eradication in India has officially reached 100%, there are still 7 million brothers and sisters struggling with this affliction. They continue to lead challenging lives, eagerly awaiting the support of compassionate individuals like you. We request you to come forward and join us in this humanitarian effort. Your participation in this selfless service will be a valuable contribution to humanity.